Dear student, I am Manohar Patil. आज हम स्टडी करने वाले हैं some formulas those are used for the NEET JEE और CET examination perspective. So बहुत ही important lecture है, last तक देखना है. So let's we start. So now we derive the energy of solid sphere performing the rolling motion. So we know that what is meant by rolling motion. The rolling motion means body possesses both translation as well as rotational motion. So this is the example. We draw the diagram of solid sphere. It rotating about an axis passing through its center. Then now it is moving along the straight line. It performing the translation as well as rotational motion. We have to remember some notations regarding that sphere when it's performing the rolling motion. So first one is u be the initial speed. So we know that जब भी बॉडी मोशन स्टार्ट करेगा तो इनिशियली वो रेस्ट पे रहेगा तो उसका स्पीड 0 रहेगा. आफ्टर दैट व्हेन इट्स परफॉर्मिंग द रोलिंग मोशन तो उसका ट्रांसलेशन स्पीड है वी बी द ट्रांसलेशनल स्पीड. It performing the rotational. So what is the omega? Angular speed. Capital R be the radius of the solid sphere. M be the mass of the solid sphere. And most importantly आपको याद रखना है what is the formula? Moment of inertia of solid sphere. बहुत ही simple formula. You can remember that is I equal to 2 divided by 5 mr square. So both important formula. You can solve the examples. They are asking to the NEET JEE examination. इसको हमें compare करना है with standard formula in terms of radius of gyration. So what is the formula? I equal to mk square. So equating both. So after equating both, what we get? mk square is equal to 2 by 5 mr square. On both side अच्छे से observation करना है. What we get? Mass get cancel. What is remaining? Take the ratio of k square divided by r square equal to 2 divided by 5. So now we know that whenever the object performing the rolling motion उसका जो total energy है by solving the addition of sum of the translation as well as rotational, so that is E equal to half, remember formula, half mv square into bracket 1 plus k स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अच्छे से इसको याद रखो. बस यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना है k स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो इसलिए हमने दोनों को इक्वेटिंग किया और वहां से रेशियो फाइंड आउट किया. सो सब्सटीट्यूट. सो दैट इज हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, बहुत आसान है. 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड करना है, दैट इज 7, 7 बाय 5 हो जाएगा. सो दैट इज हाफ mv स्क्वायर 7 डिवाइडेड बाय 5. सो फाइनल आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो. 1 7 जा 7, 2 5 जा 10, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 10 into mv square. So this is the most important formula for the sphere when sphere performing the rolling motion. So we can calculate the total energy E equal to 7 by 10 mv square. So बहुत easy था. कैसे सॉल्व किया हमने? वेरी इजी. वी जस्ट रिमेंबर द फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 2 by 5 mr स्क्वायर. उसको हमने कंपेयर किया विथ स्टैंडर्ड mk स्क्वायर. आफ्टर दैट वी कैलकुलेट k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. एंड वी नो दैट ऑन नोटेशन आफ्टर सब्सटीट्यूट इनटू द फार्मूला ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग द रोलिंग मोशन, या फार्मूला आपको याद रखना है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ये फार्मूला याद रखना है ताकि आप नीट जेई और सीईटी के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो इजीली अगर आपने ये फार्मूला याद रखा. सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कुछ डाउट है सो यू डेफिनेटली टेस्ट मी, आई विल आंसर दैट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको फॉर मोर वीडियोस इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है. थैंक यू वेरी मच.